this we are going to discuss the topic of CRISP DM. So CRISP DM has basically 6 phases into it. So we start from business understanding, then data understanding, data preparation, modeling, evaluation and deployment. So what exactly happens in all these phases? So as you can see in this diagram, the details of all these phases have been given, and this is a diagram which you need to do very thoroughly. So let us understand what exactly happens in each of these 6 phases in short. Business understanding में the most important thing you have to understand is the background of your business. So start by getting to know the objectives of the business that you are going to do your data science process for. Then you identify who are your key contact person, कहाँ से आपको information मिल सकता है, कहाँ से आपको validation लेना है. So सारे ऐसे लोगों को identify करो. फिर ये decide करो कि आपके user को चाहिए क्या, what are the user needs and the success criteria, कि when will I say कि my entire data science process has been really implemented successfully. So ये पहले identify करो. फिर जाओ problem की तरफ. Understand the problem. Understand after solving this problem or after encashing this opportunity, what are the benefits that I expect. Assess the current situation of the organization you are working with or the current situation of your user. Are they existingly using any data mining solutions? Are they existingly using any data science solutions? What are the resources available for them? Or what resources they can purchase if required. So assess all that part. Then you start making small plans. You think about how much effort is going to go in. Identify the critical steps कि कहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या करना है. ये सब होने के बाद अभी आप डेटा पे कॉन्सेंट्रेट करो. So you go to phase 2, that is data understanding. So you describe your data, you identify what types of data you have. Is the data that you need readily available or it has to be collected? उसका रेंज क्या है, उसमें कोरिलेशन क्या है, एक बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स उस पर परफॉर्म करके देखो. डेटा को स्टडी करते वक्त ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि उसमें कुछ इश्यूज़ है क्या, जैसे मिसिंग एट्रीब्यूट्स हो गए या एरर्स हो गए या कुछ कंसिस्टेंसी इश्यूज़ है क्या. ये इश्यूज़ आप आइडेंटिफाई करोगे डेटा अंडरस्टैंडिंग में, बट इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे आपके नेक्स्ट स्टेज में जो है डेटा प्रिपरेशन. सो यू सिलेक्ट नाउ यू हैव गैदर्ड लॉट ऑफ डेटा, बट आपके लिए कौन सा डेटा चाहिए, एक सिलेक्शन क्राइटेरिया, एडिशनल सोर्सेस अगर लगेंगे तो वो क्या है, वो सारा अभी आइडेंटिफाई करो एंड डेटा को क्लीन करो. मिसिंग वैल्यूज़ हटा दो, नॉइज़ को क्लियर आउट करो, आउटलायर्स के साथ क्या करना है, एरर्स को कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है आपको. यू हैव टू डील विद ऑल दीज थिंग्स. वंस दैट इज डन, यू construct data by working on derived attributes or replacing the missing values or guessing the missing values, that is imputing missing values. Once that is done, integrate and format your data. एट्रीब्यूट्स को रीऑर्गेनाइज करो जैसे आपको चाहिए, रिकॉर्ड्स को रीऑर्गेनाइज करो, कॉलम्स को रीऑर्गेनाइज करो, रीनेम करो जैसे आपको चाहिए. वंस योर डेटा इज रेडी, नाउ यू गो टू द 4th phase, दैट इज मॉडलिंग. यहाँ पे आपके सारे एल्गोरिदम्स आएंगे. अभी आपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किया था फेज 1 में, वो फेज 1 के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से करेक्ट मॉडलिंग टेक्निक चूज करो. टेस्ट करो कि वो अच्छे से वर्क करेगा या नहीं, वो वैलिड है या नहीं. फिर पैरामीटर्स सेट करो. अभी पैरामीटर्स मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग ऑन अ न्यूरल नेटवर्क, so the weights become your parameters. So for every algorithm there will be a different set of parameters, so set those parameters for the best possible result. Assess the performance of your models. If you are working with 3-4 different models, then rank them as per their effectiveness. Compare which model gives you a better result. Once that is done, you come to the 5th phase, which is evaluation. Now model जो आपने बनाया, जो एग्जीक्यूट किया, उसको चेक करने की बारी है. अभी आप उसको चेक
with respect to what करोगे? The business criteria, the success criteria that you had decided in phase 1. डिसाइड करके रखा था phase 1 में, बट अभी यूज़ करोगे phase 5 में. You will check if your data mining exercise or data science exercise is being successful or no. Are any things that you have missed out? Any alternative actions you have to take? Evaluate all that. And once the evaluation is done, now comes the deployment. Communicate with the user. Do model integration. Make sure that you are maintaining proper documentation. You are writing a final report wherein your successes, your failures, the things where you think you could have done things better. ये सारी चीज़ें document करो, feedback ले लो. This phase will basically be useful for other projects as well, which are going to come later on in time. Because other projects can now learn from your mistakes. As well as आपको बाद में ये मॉडल मेंटेन करने को जो चीज़ें लगने वाली है आगे, वो सारी चीज़ें अभी डिप्लॉयमेंट में अच्छे से प्लान करके एक जगह पे रख दो. So you are not only taking care of documentation properly, you are also taking care that whatever material was used, whatever reports are there, everything has been in one place. All the files that you have used for this project are in one place, which will help you to monitor and maintain the model in the future. So that's it for this answer.